Okay, good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir, you are audible. And the PPT is visible? Yes, sir. Yeah. So, today we will see a new topic, that is storage management. This is again an important topic in Linux operating system. Okay, so as we know that storage is very important on every devices, that is on computer, either that is a desktop computer or the server computer, because that particular devices are used to store all the information. Okay, so whenever we create any server, that is a database server or any other server, storage is very much important for storing all kind of information. So information can be your textual information, audio information, video information, or images. So what kind of server you are designing, based on to that the content will be changed. I mean, just like if you are creating a YouTube server, then all these are the video content. If you are creating a web server, so that is a mixture of textual, audio, and video information. Okay, so storage is a very important aspect in internet server, that is a real-time server. So all of you know that when we use the storages, we can buy physical storages, that is a hard disk drive, and that is connected to your system. And right now, up till this point, you have used the storages in your laptop or desktop to store the data, and that kind of storage management is nothing but a static storage management. Static means what? There is a rigidity in creating a partition of that particular storages. We have a fixed size of storage. We have some specific limit, that is how much storage we can extend to your machine. Just like in laptop, you connect one hard disk drive, or if your machine or laptop will support more than one hard disk drive, then you can add. But every machine is having a specific limitation, that we can't go beyond that particular limitations, that is physical limitations or the support which is offered by that particular uh, operating system or the devices. Okay, or motherboard. But as we are in the internet domain, in the cloud computing era, where we can store everything onto the internet, we have a huge number of customers, and the customer data, their transactions are stored into the database. And definitely when we talk about the database where actual data will be stored, that is onto the storage device. Okay, so in this particular real-time servers, what happened, uh, if we consider one example, that if we are uh, creating a server for banking organization. Okay, right now you are buying 1 terabyte of hard disk for storing a database of that customers. Okay, and after 1 year's of business, that bank have 1 lakhs of customers, and definitely the data of that particular customer will be stored onto the server. So storage requirement will drastically increase in that scenario. So after 1 year, if your 1 terabyte of hard disk is exhaust, then what you can do? Either you need to replace that particular hard disk, okay, because that particular hard disk is not sufficient to store the more data after 1 year or 2 year. That will be exhausted, and you have to replace that. Okay, so you can add one more hard disk into your system. Again, after 2 years, that second hard disk is now exhausted, and in future, if you consider that particular motherboard or your server which you have purchased 4 years before will not support more than four hard disks or 4 terabyte or two hard disks. Okay, so what will be the solution? Again, we have to replace that server, and you have to buy a new server with the new configuration which support the more storages. Okay, so all this stuff are called as a static kind of storage management. Earlier this is okay, but nowadays when we are talking in terms of cloud domain or cloud computing, and in the real we talk about the real-time servers which are running for 24/7. So this is not possible to replace that particular hard disk
or that static kind of storage management is not suitable for that particular environment. Okay, so definitely we required a solution for that particular static kind of storage management. And for that, Linux operating system will offer one aspect that is called as LVM, is a logical volume management concept. Okay, and as Linux will have a rich set of commands, so similarly for the storage management system, again Linux will offer you different command, different tools for storage management. Okay, so before moving to a particular commands of storage management, we can see some basic concept of the storages. So storage is basic. When we talk about the storages, this is called as the devices, physical storage devices. That can be your hard disk, that can be a pen drive or optical drive. So that particular devices can be used to store the information. So you are familiar with the hard disk drive. Okay, every machine is having a hard disk drive to store the information. So that is called as the secondary memory. Your RAM is a primary memory, and hard disk drive are generally a physical device that is called as the secondary storage, where all the information are stored permanently. Okay, so we have a devices that is a physical devices, and that devices have a different partitions. So you know that when we buy a hard disk drive, that particular comes with the particular size capacity that can be measured in megabytes or terabytes or gigabytes. So we can divide that particular physical device, physical storage devices into a number of sections that is called as the partitions. Okay, so devices are, we can divide that particular storage into different sizes or capacities. Okay, so if you are having a 1 terabyte of hard disk, we can divide it into either first partition can be of 250 GB, then second partition is of 250 GB, and last partition is of 500 GB. So total 1 terabyte space is available, and you are divided it into separate partitions. And what are the limitations of this partition? We cannot extend file storage or the data storage beyond the particular partition. Means if we are having a second partition, that is D drive of 250 GB, and if that particular 250 GB is exhausted, and if your third partition, that is 500 GB partition, is having a space, even 200 GB of space, but you are not able to extend the content of your database which is available on partition D to a partition C. So this is a basic limitation of a partition, that all these are the static partition. आपके machine के ऊपर या आपके laptop के ऊपर जो भी आपकी hard disk है, and whatever partitions are available, that is we give a nomenclature to that partition, just like a C drive, D drive, E drive. Okay, and that partitions are the static partitions. Means once before installing, when we create a partition, all these partitions are fixed size, and we are not able to resize that partition. Nowadays we can do that, but if that partition is having a data that can be deleted, so you have to take a backup of that, you have to take care of that before doing that. Or if you want to resize that partition, then you can copy all the data from that particular storage, then again create an unpartitioned space. And now by using some tools which are available, that is BARP, and some tools are available, so using that, you can create a new partitions of your choices. So that is called as the static activity. Means manually you are doing everything, that that particular resizing of partitions are done by the user with using some command. But in real time scenario, this is not possible to take a backup of all this data which is available onto the storages, and then you can add a new hard disk, or you can resize the partition. Okay, so in that scenario, what we required? We required a dynamic kind of storage management, and that is an important aspect nowadays in every server. Okay, so we will not use a static storage management in real-time servers. We will use a dynamic storage management concept using a different aspect or different tools. Okay, so Linux will indeed provides a set of commands for the dynamic storage management. So we will see that.
So these are the storage basic, that is we have devices, that is physical storage devices. Again, this is called as a block devices also, because when the data is stored onto this particular storage devices, that stored into the form of blocks. So either this is called as the physical or secondary storage devices or the block devices, and that particular block devices can have a multiple partitions. Maximum how many partition we are able to create onto this physical storage? We have seen this in booting process. Can anyone answer this question? Yes? 3, sir. Yeah? 3. No? Wrong? If you remember the booting process and the MBR, at that time we had discussed that is what maximum primary partitions we are able to create on any Sir, uh, 4. 4 partition. Good. Why? Because we have to store their initial address Yeah, in that 64 MB. bytes are reserved in the MBR, है ना? Yes, And every yes, sir. partition will require the 16 bytes. So 64 are reserved. So that's why we are only able to create a 4 primary partitions on any storages. Okay. So for resolving that particular limitations, we have another kind of partitions on the storages. So we have a physical devices. Okay. And physical devices can have a primary partition. So primary partition only we are able to create a 4 primary partitions. And suppose as a system administrator you required more than 4 partitions, but due to the limitations we are not able to do that. So how we can divide that particular means, if you are running a 10 different servers or 10 different applications on your server, and for every server you want to allocate a different partition. So due to this limitation we are not able to create a more than 4 partition. मुझे कैसे चाहिए, सेपरेट एक कंटेनर चाहिए हर एक एप्लीकेशन के लिए या हर एक सर्वर के लिए, बट यहाँ पे तो मैं 4 ही बना सकता हूँ ड्यू टू दिस लिमिटेशन. So how we can resolve this particular limitations by using the extended partition. Okay, so Linux operating system will provide you or offer you a facility that you can convert that particular primary partition into extended partition. Okay, we can create a primary partition and we convert that particular primary partition into extended partition, and then within that particular extended partition we can create a logical partition. Okay, so we can create as many as logical partition within that particular storages, and that is a separate disk or separate partition we can create. Okay, in physical storage what we have, we are only able to create a 4 primary partition due to that limitations of 64 bytes. But if you require more than that, if you require 12 partitions or if you require the 15 partitions of your storage, then this particular extended partition and logical partition concept will provide that facility. It will resolve that particular limitation. Okay, so by using a command we can create an extended partition on your storage. You can define a space, means if your machine if your storage is having 500 GB, so you can completely define that particular partition as an extended partition, and within that extended partition we can create as many as of logical partition. आप 15, 20, 25 भी partitions उसमें create कर सकते हो. ओके, तो जैसे प्राइमरी पार्टीशन नहीं होता तो वी कैन कन्वर्ट दैट प्राइमरी पार्टीशन इनटू एक्सटेंडेड पार्टीशन एंड दैट विद इन दैट एक्सटेंडेड. तो ये लॉजिकल पार्टीशन कहाँ पे बनता है? विद इन द एक्सटेंडेड पार्टीशन. एंड लॉजिकल पार्टीशंस आर नथिंग बट व्हाट इज से software based partition which is created just like when we create a virtual machine and we can add a VDI, that is virtual disk image. So similarly we can create a logical partition. Okay, जैसे आपने आपके मशीन के ऊपर या डेस्कटॉप पे होगा वो कैसा स्टैटिक पार्टीशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल पार्टीशन. तो आपने सी ड्राइव बनाया है, डी ड्राइव बनाया है, ई ड्राइव बनाया है, तो ऑल दिस आर द स्टैटिक वन एंड दैट इज अ
फिजिकल पार्टीशंस विच आर क्रिएटेड ऑन, और आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, आप उसको रिसाइज नहीं कर सकते हो, दैट इज स्टैटिक वन. But when you go for the logical volume management or logical partition, so that partitions have a functionality that without deleting that particular partition, you can resize it. By using commands, we have a command in logical volume management in Linux operating system, by which we can create logical partitions. We can define a space for logical partition. Suppose if you have defined one logical partition of 10 GB for any server, and in future you realize that okay, that particular server do not require the 10 GB of space, so you can reduce the space of that particular partition in the real time, in runtime environment. Suppose if you have created some FTP server, and जैसे आपने दो partition बनाए, दो server बनाए, one is web server and another is a FTP server, and you are assigned equal partition space, or the partition with the equal space, that is 20 GB 20 GB. So after 1 year, FTP server का जो storage है वो exhaust हो गया है 20 GB, because that is the FTP server, you upload the what is say applications onto that particular FTP servers or data continuously. So definitely after 1 year that is exhausted, and web server only 2 GB is used. Okay, और दोनों एक ही physical devices पे. So what you can do? Definitely you have to provide a more space to the FTP server. So we can do that runtime. In the runtime, I am talking about the runtime. My server is running and I want to extend the capacity of that FTP server. अब मुझे पता है कि वेब सर्वर के जो मैंने दिया है 20 GB, उसमें से 3 GB या 2 GB यूज हो रहा है, बाकी का 17 GB वो अनयूटिलाइज्ड है, and my FTP server is required a more space. So by using a logical volume management, you can resize the partition, means even you can reduce the partition. So if you right now you think that if your web server do not require the 20 GB right now, okay, 5 GB sufficient to them, you can reduce the capacity of that. You can reduce the capacity of that particular web server. तो आप 20 GB जो था उसको आप क्या कर दो, 5 GB कर दो in the runtime. Okay, and then after जो बाकी का 15 GB स्पेस आपको अवेलेबल हुआ है, that space will be added to your FTP server. वो होता है dynamically. We will see the logical volume management, how we will do this. For that we have a volume group and all this concept. So that logical, that is called as the logical volume management. So whatever partitions or that particular, whatever the volumes are assigned for that particular server are called as the logical. तो अभी जो क्लाउड में हम लोग जो स्टोरेजेस यूज करते हैं, ऑल द स्टोरेज आर द लॉजिकल स्टोरेज, नॉट अ फिजिकल. No cloud service provider will provide you a physical storage directly. First of all, that will convert it into a logical, and that logical partitions are now assigned to your server or whatever applications you, for what you require that particular storage. Okay, so this is a partition type, that is physical partition, extended partition, and a logical partition. So this is an important one. So physical is nothing but a primary partition. Extended partition, to overcome the limitations of primary partition, we can create the extended partition, and within that extended partition we have a logical partition. So this is a two-way mapping, conversion of physical into a what you say logical, and logical partition is now assigned to the application. Traditionally what we do, we can directly use a physical partitions or physical storages to store the data, but nowadays all the servers will use a logical storage management. Even your cloud platform will use a logical storage management. Okay. So these are the different components of storages. As we know, that is how the data will be stored onto the storage, that is in the form of files. Okay, so basic what is the unit to store the information onto the storage? That is a files. The file can be of any type. That can be your PDF document, that can be your Word document, that can be your programming file, that can be your audio file, video file, database file, anything. So to store the information on your computer system, what you have to do, you have to convert that particular data into a particular format. You have to give the extension to that, and by using that you can save the files onto the storage. Then directories definitely are the placeholders where we can keep all our files. Okay, for our convenience, this is just like a shelf
which we create to identify what is the purpose of that particular files. So we can create a directories, and within that directories we can store the file. So directories are nothing but a file, but these are placeholders or holder which will hold the multiple files. File system. So file system is again important. So it will provide a data structure to you, how the data will be stored on your storages. So different file systems are offered by the different operating system. Okay, so as you know that Windows will use a FAT32 और NTFS file system. This is called as a file system. तो जो हम लोग format करते हैं storage को, that is nothing but creating a file system on your machine. तो विंडोज में आपको पता है, विंडोज में होता है FAT16, that is called as the file allocation table, 16 bit. Then FAT32 bits, and nowadays FAT is not used in any machine, that is used onto the Windows 98 or Windows up to Windows XP. But nowadays all this operating, that is Windows operating system, will use the NTFS file system, that is called as a network file system. But Linux will use a different file system from the Windows. So Linux is having its own file system, that is ext2, ext3, ext4, XFS and JFS. These are the different file systems are supported in Linux operating system. We will see that what is the meaning of that particular XFS, JFS and ext 1, 2, 3, 4. Even though Linux will also offer you to create any partition with any operating system file system. तो आप विंडोज का भी पार्टीशन बना सकते हो विथ 532 मीन्स अगर आपके लिनक्स में अगर कोई फिजिकल स्टोरेज है, तो इस फिजिकल स्टोरेज में अगर आप 4 पार्टीशंस बना रहे हो, so 3 partition, one partition can be of ext2 type, another partition can be of ext4 type, third partition can be of FAT32 का भी आप बना सकते हो विंडोज पार्टीशन भी, fourth partition can be of NTFS, or even it will support a file system for other operating system also. Okay, तो हम लोग देखेंगे वो कौन से support करता है when we go for the fdisk command. So Linux will offer you to create a file system of any operating system on the partition. Okay, so this is a file system and this is an important one again. So we can see it in formatting of partition. Now then, logical storages. So we know that already we have discussed what is logical storages. So now everything is a logical, means when we create a virtual machine, that is a logical, that is not a physical one. है ना, आप जो virtual box में virtual machine बनाते हो, that is called as a logical because that is a software emulation of your physical devices. So similarly, logical storages are nothing but a what is a software-based simulation of your physical storage, that is of a hard disk drive. So your physical hard disk drive now is converted into a simulated version, and that is called as the logical storages. And in dynamic storage management, these logical storages are very important aspect. Okay, physical storage. Physical storage means actual. This is a hard disk drive, a physical device which we connect to your computer for storing the data. Okay. तो जो आप हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हो उसका एक नॉमेनक्लेचर आता है, एक पर्टिकुलर नाम मिलता है. जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में योर हार्ड डिस्क इज आइडेंटिफाइड यूजिंग SDA, SDB. So SD means that is storage devices A, B, C, D. So if you added a first storage devices in your computer, then that is that will have a nomenclature that is SDA. Earlier, the older version of Linux operating system will uses a HDA, that is hard disk A, hard disk B, but now that is called as a SDA, storage device A. Okay, so storage का S, device का D, and A means these are character which is used to specify कि कौन से नंबर की हार्ड डिस्क है. अगर पहली हार्ड डिस्क है तो A देगा, आप सेकंड हार्ड डिस्क अगर ऐड करोगे तो that will give a B, then C. So whenever the new physical devices are added in your Linux operating system, the devices will be detected by the kernel and it will assign one nomenclature to that particular storage devices using this. That is either SDA, SDB, SDC, and that is called the physical storage.
And then we have a logical volume manager, that is called as the LVM concept. And the LVM is nothing but a set of commands which are available for dynamic storage management in Linux operating system. Okay, so LVM we will see in the next second part of this particular class. Okay, so as you can see that this particular hard disk drive partition. So basically, when we uh, have a hard disk drive, we can have a multiple operating system onto that. So this particular PPT will show that IDE and SCSI hard disk can be partitions. Okay, nowadays we can use the SCSI hard disk drive. Okay, maximum of 4 primary partitions can be possible on any physical storage. One primary partition may be an extended partition. Okay, so primary partition can have a multiple extended partition, and that extended partition can have a multiple logical partition. Okay, and extended partition can be hold an unlimited amount of logical partition. So you can see this. So we have maximum 4 primary partitions. One primary partition may be an extended partition. So you can convert this particular primary partition into extended partition. Extended partition can have a unlimited amount of logical partition. तो ये जो 4 का limitations है वो हम लोग क्या करते हैं, you can overcome by converting that primary partition into extended and then creating a logical partition within the extended partition. So you can see this. This is storage which is shown in the diagram. Okay, and we have this particular partitions. Yeah. Sir, I have a doubt that if suppose Yes. our PC has 4 partitions already and we connect some other external storage, hard disk or USB. So in what kind of storage will it be counted then? Portable, plug and play. तो सर उसके लिए मतलब That is called okay that sir. is just So like a flash storage. Okay sir, okay sir. हाँ, बोलो. Because that is a flash storage, na, that is not permanently added. That is through USB. Okay, so that is a portable, just like you can add a pen drive in your machine through USB. So that is not a permanent storage devices. That can be आप permanently उसको connect नहीं करके रखते हो ना. Okay. So that is again a storage devices, but that is called as a flash drive. That is called as a flash ड्राइव. तो उसका जो मैनेजमेंट होता है उसका अलग होता है. जो आप एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज हार्ड डिस्क ऐड करते हो तो वो डीईवी में मैनेज होता है. ओके, और आप जो फ्लैश ड्राइव है, बिकॉज दैट इज अ पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ पेन ड्राइव. तो उसके लिए जो स्टोरेज मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है. विल इट बी क्लियर? Yes sir, it is clear. Yeah. If you add a more hard disk drive, then that will be permanently available using SDA1. That is not a storage disk. That is not a physical storage which is counted as a hard disk drive. If you are connecting a portable devices. Okay. So as you can see that this particular storage are divided into a different parts. So already we have having a master boot record. Okay, MBR as a first part of this particular storages. Then we have one partitions on which we have a Windows operating system. Okay, so this is a complete SDA. SDA means this is a complete storage, and this particular SDA can have a multiple partition. So you can see that this particular SDA, so SDA means this is a storage device A. So this is the one physical disk which is connected on your machine. Okay, on that particular SDA can be divided into a multiple partition. So you can see that we have one partition that is SDA1, because that is created under SDA. So what nomenclature are given for the sub partition? That is SDA1. So this is the first primary partition, holds a Windows file system. Okay, so these particular partitions which we have created, and maybe that particular partition is formatted with the NTFS file system. So that's why this is written, that is first partition, that is SDA1. This is the first primary partition, holds a Windows file system. Okay,
Then we have a SDA2. So this is the second partition which we have created under SDA. The second primary partition is an extended partition and holds three logical partitions. So now we have created the second partition. Okay, and that particular primary partition, that is second primary partitions, are now converted into extended partition. Okay, because we want to create a multiple partitions into that. So SDA2, what is the nomenclature of this particular partition? ये important है यहाँ पे nomenclatures. What is the name which is given to this partition? SDA2. अगर आप चार प्राइमरी पार्टीशन बनाते हो तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा? 1, 2, 3 and 4. Okay, for extended partition, as you can see that this particular space, that is SDA2 space, are reserved as an extended partition, and within that extended partition we have created a 3 logical partition. कितने logical partitions हमने बनाए हैं? 3. Okay, because we can create a unlimited number of logical partitions within the extended partition, but कब तक? जब तक उसकी कैपेसिटी है ना, उतना स्टोरेज होना चाहिए. तो अगर आप एक्सटेंडेड पार्टीशन, अगर आपका 20 जीबी का है तो आप 1-1 जीबी के 20 पार्टीशंस बना सकते हो वहां पे, या आप 2-2 जीबी के 10 पार्टीशंस बनाओ. ओके, या 4 पार्टीशन आप 2 जीबी के बनाओ, बाकी के पार्टीशन बची हुई स्पेस के बनाओ. So you can have that kind of flexibility that within the extended partition you can create a logical, any number of logical partition till the capacity of that extended partition will be exhaust. Okay, now you can see that within that extended partition we have created 3 different logical partition. So first is a Linux slash. So Linux slash is nothing but a partition which is created for the root. रूट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक पार्टीशन बनाया है, तो लिनक्स स्लैश लिखा है, यानी लिनक्स रूट, है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए कुछ स्पेस रखता है. हम लोग देखेंगे वो कमांड्स में किस तरह से होता है. सो दैट इज लिनक्स स्लैश इज नथिंग बट दिस अ पार्टीशन दैट इज SDA5. फर्स्ट लॉजिकल पार्टीशन होल्ड्स अ लिनक्स फाइल सिस्टम दैट विल बी माउंटेड एज अ root of file system. Why this particular SDA5, not SDA3? Can anyone answer this question? अगर आप logical partition बना तो always that is started with the SDA5. Still we have created only 2 primary partition, that is SDA1 and SDA2. उसके बाद भी जब हम लोग, हाँ सर, वो SDA2 में लिखा है कि extended partition and hold 3 logical partition. So maybe those 3 are SDA2, SDA3 and SDA4. No, SDA1, 2, 3, 4 are reserved for the primary partition. आप सिंगल भी अगर प्राइमरी पार्टीशन बनाओगे और उसके बाद अगर उसमें लॉजिकल पार्टीशन बनाओ तो ऑलरेडी दैट इज स्टार्टेड विद द 5. ये ध्यान में रखो, क्योंकि प्राइमरी पार्टीशंस कितने होते हैं? 4. ओके, तो स्टार्टिंग के जो भी पार्टीशंस नेम रहेंगे, जैसे SDA1 और SDA2 यूटिलाइज हो गया, अब आप बोलोगे कि सर 3 और 4 तो यहाँ पे अवेलेबल है, बट दैट पर्टिकुलर पार्टीशन नेम आर रिजर्व फॉर द प्राइमरी पार्टीशन. वो छोड़ देता है. आप जब भी लॉजिकल पार्टीशन बनाओगे तो ऑलवेज दैट इज स्टार्टेड विद द SDA5, नॉट विद द 3, नॉट विद द 2. अगर इसमें आपका सिंगल भी SDA1 एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है और उसमें भी आप अगर लॉजिकल पार्टीशन बनाते 4, तो वो कहां से शुरू होते हैं? 5 से. ऑलवेज विद द 5. तो 1, 2, 3 and 4 आर रिजर्व फॉर द प्राइमरी पार्टीशन. तो प्राइमरी पार्टीशन कितने होते हैं? 4. So these 4 nomenclatures, first 4, that is SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 are reserved for the primary partition exclusively. Either you can use it or you cannot use it. और जब भी आप कोई भी लॉजिकल पार्टीशंस आप बनाओगे, एंड ऑलवेज दैट इज स्टार्टेड विद द SDA5. 4 छोड़ के वो 5वां जो पार्टीशन रहेगा, वो पार्टीशन रहेगा आपका लॉजिकल पार्टीशन. सो विल इट बी क्लियर व्हाई दिस SDA5? Yes sir. Yes, yeah. So ये 4 छोड़ के फिर 5 हुआ, तो लॉजिकल पार्टीशन ऑलवेज स्टार्ट विद द 5 नंबर. ओके, 5th पार्टीशन नंबर. तो SDA5 तो हमने पहला लॉजिकल पार्टीशन बनाया जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो आपका फाइल सिस्टम होता है, रूट ऑफ फाइल सिस्टम, वो स्टोर करने के लिए यहाँ पे. दूसरा जो पार्टीशन है दैट इज लिनक्स स्लैश होम. तो दिस अनदर पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन, दैट इज SDA6.
This is a second logical partition holds a Linux file system that will be mounted as a slash home. So these particular partitions are reserved for the user in Linux operating system for storing the users information, क्योंकि ये जो पहला पार्टीशन है ये रिजर्व करता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद के लिए. ओके, एक स्टैंडर्ड उसका साइज जो भी बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड होगा ये हम लोग नहीं करते हैं. जब हम लोग ओएस इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो जब हम लोग स्टोरेज डिफाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल डू दैट. It will create a three different partition. One is Linux root partition, that is called the bootable partition. Second is Linux slash home partition, which is a space which is allocated for storing the users information. है ना, जैसे हम लोग यूजर्स क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली यूजर विल क्रिएट द फाइल, इट विल क्रिएट द कंटेंट. तो वेयर दैट कंटेंट ही विल स्टोर, definitely that they also require some space. So this Linux slash home, these are another partition which is created onto this, will be reserved for the user space. And third partition which is created as a SDA7, and that is called as a swap partition. So this is the third logical partition which holds a Linux swap space. What is meant by swap space? Can anyone tell? Sir, that memory which is specially reserved by operating system while creation. Yeah, to support the primary memory. Okay, because primary memory is limited in nature, and for swapping purpose, operating system will create one swap partition. So always your operating system, Linux operating system will create a swap partition. One partition or one storage partition will be used for that particular swap. हम लोग देखेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं. यूजर कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्वैप पार्टीशन एंड एक्सटेंड इट कैपेसिटी. तो उसके लिए भी कमांड्स है, उसके लिए भी पार्टीशन हम लोग रिजर्व कर सकते हैं, वो भी हमें प्रोसेस देखना है. सो इन मोर डिटेल फॉर द स्वैप पार्टीशन वी विल सी इन द कमिंग पीपीटीज. तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको. व्हाट इज एसडीए? व्हाट इज एसडीए 1 2 5 6 7? Okay, so we have one physical device. Physical devices are partitioned into a number of parts, and that is called as a partition, and that partition can have a multiple file system. Okay, so how we can make a partitions of that particular files? Definitely we require some tool. Okay, so we require how we can do this all activity. Means when we have a hard disk, how we can create a partitions, how we can define other that can be used as an extended partition, or that can be used as a swap partition, or that can be used as a logical partition. So for that we have a different tools. Okay, so these are called as the partitioning tools, which is used to create a partitions on your raw hard disk drive. So fdisk is a utility. So this is the most popular and most used tool for creating the partition, and every operating system will provide this particular tool. fdisk inbuilt hota hai. So virtually every PC OS comes with the tools fdisk to create a partition for that OS. So Linux is having the same tool, Windows is having the same tool for creating the partition. Other tools are parted, gparted, tp-parted. So these are the different tools which is again available, and you can download and you can use this. But if you don't want to download any third-party tool because you are not sure either that is good or not, so you can directly go with the fdisk utility, which is already available in every machines, every operating system. So no need to install it. Already that is available in your shell, and you can use this particular fdisk utility to create a partitions. Okay, so this is an important, most important tool for storage management. So what activities we can perform in storage management? So basically these are the steps in Linux operating system for creating and using this particular partitions.
So this is the first step, that is we can create a partitions. So for creating a partitions, we have a fdisk tool. So how we can create a partition? So we have to use a fdisk tool to create a partition. So we can have a storage, we can create a partition. तो उसमें options है, commands है, हम लोग देखेंगे उसको, उस tool को कैसे use करते हैं. Then second is, once you create a partition, we have to format a partition. We have to format a partition. Just like in Windows operating system, what we do, we can create a partition, we can have a format command, and we can write down format C colon D colon. Okay, so that will create a file system that is either the what is a FAT32 or NTFS file system on your hard disk drive. But in Linux operating system, that process is something different. So we have different commands for that, for creating a file system onto the storage. So we can have a mkfs command, that is called the make file system. तो mkfs command से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं पार्टीशन को, जो हमने फर्स्ट स्टेप में पार्टीशन बनाया है उसको हम लोग फॉर्मेट करना इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ फाइल सिस्टम onto that particular partition. And for that we have a mkfs command, make file system. So वो command हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप में. Then after, once you format that partition, like a Windows operating system, still that particular partition is not available for use. जैसे Windows में क्या होता है कि आपने partition अगर D drive को format कर दिया, तो immediately that partitions are ready for use. You can store any data onto that particular partition. But in Linux operating system, for the security purpose, what they have done, there is no automatic use of that particular storages. Automatically वो available नहीं रहता है. What you have to do, you have to mount that particular partition at some location. तो जैसे आपने ये पार्टीशन बनाया, पार्टीशन को फॉर्मेट किया, तो आपको पार्टीशन अवेलेबल नहीं है अभी भी यूज करने के लिए. तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फॉलो वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज माउंटिंग अ पार्टीशन. दैट इज द थर्ड स्टेप. You have to mount a partition. Okay, you have to create one folder, you have to map that particular partition with the folder, and manually you have a command to mount that partition to a particular folder. क्योंकि इसमें C drive D drive नहीं होता, आपके partition जो access होते हैं that is through a folder, that is through a directory. जैसे Windows में आपने देखा है कि we have C drive, जैसे हम लोग फॉर्मेट करते तो D drive उसको ड्राइव लेटर मिल जाता है, एंड दैट स्पेस विल बी अवेलेबल फॉर स्टोरेज पर्पस. मगर लिनक्स में ऐसा कोई भी आपको पार्टीशन नेम नहीं मिलेगा. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ऐसे नहीं मिलेगा. पार्टीशन जो भी रहेंगे दैट यू हैव टू मैप विथ अ पर्टिकुलर फोल्डर, अ डायरेक्टरी. आप उसको कर सकते हो, अपनी खुद की डायरेक्टरी बना, जो आपने पार्टीशन किया है उसको आप मैप करो. एक कमांड उसमें यूज होती है mnt, दैट इज माउंट कमांड. तो माउंट कमांड से आप मैन्युअली उसको माउंट कर सकते हो. अगर आपका काम हो जाता है तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस आपको लगता है कि उसका डेटा कोई एक्सेस ना कर पाए, तो यू कैन अनमाउंट दैट पर्टिकुलर पार्टीशन स्पेस. तो आप अनमाउंट करोगे तो दैट पर्टिकुलर पार्टीशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज अगेन. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू यूज दैट पार्टीशन अगेन यू कैन माउंट इट. इफ योर वर्क इज ओवर यू कैन अनमाउंट इट. Okay, so that is a security parameter, that security aspect. So आपको जब रिक्वायर्ड है आप उसको माउंट करो, यूज करो, और जैसे आपका काम हो गया उसको आप लॉक करके रख दो, है कि नहीं, डिस्कनेक्ट कर दो. दैट इज कॉल्ड एज डिस्कनेक्टिंग. तो व्हेनेवर यू वांट टू यूज दैट यू कैन कनेक्ट इट as an administrator, you can use it, you can retrieve the data, you can store the data, and when work is over you can disconnect it. We can call it as connect and disconnect. So that process is called as the mounting and unmounting of that particular partition. Okay, auto mounting भी होता है, you can manually do it, or either we can go for the auto mounting. आपको लगता है कि ये बार बार कौन करेगा, तो once I can define that particular auto mounting process. और एक बार आपने auto mounting, तो जब भी आप particular operating system को boot करोगे, तो every time when you boot the operating system, automatically that partitions will be mounted at that particular location. You know, manually you no need to map that particular partition using mount command or unmount command. तो अपने आप माउंटिंग होगा. तो ऑटो माउंटिंग कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे. फॉर दैट वी रिक्वायर्ड fstab फाइल. We have to edit and make an entry into that fstab file for the auto mounting.
So these are the three basic steps which is required for the storage management in Linux. The first step is creating a partition, तो उसके लिए fdisk command है. Second step is formatting a partition. So once you create a partition, so we can format it. So formatting is nothing but creating a file system, and for that we have a mkswap command and mkfs command. Okay, and third step is that is mounting a partition. That is once the partition is formatted and ready for use, so you have to mount that particular partition, and then after mounting that partition, that is available for use. So is it clear what is this steps? Any doubt till now? No, sir. No. Okay, so we will go for the first step, that is creating a partition, and for that we use a fdisk utility. Okay, so what is fdisk utility? Format disk, the full form of this particular command. So this is a command. This is a tool or command. We call it as a tool or command. So fdisk, also known as a format disk, is a dialog driven command in Linux used for creating and manipulating the disk partition. So this particular fdisk command is used for creating or manipulating. Create, either you can create a new partition, okay, on the particular physical storage, or either if your storage is having existing partitions, then you can manipulate it. Manipulate means you can delete any partition, you can add a new partitions into that. Okay, so that is called the manipulation of the disk partition. It is used for the view, create, delete, change, resize, copy and move the partition on a hard disk drive using the dialog driven interface. Okay, so it is used to view, means if you want to view what partitions are created onto the storage, so same command is used. This is also used to create a partition. So this is a dialog driven, means the menu driven tool is available, and by using this menu driven options tool, we can create a partition, we can delete a partition, we can print a partitions, we can change the partition size. Okay, we can resize, copy or move the partition on the hard disk. Fdisk allows you to create a maximum of 4 primary partitions, and the number of logical partition depends on the size of the hard disk you are using. Okay, so again we can only create 4 primary partition using this particular fdisk tool, and it allows you to create an extended partition onto this, or convert this particular primary partition into extended partition, and you can create as many as logical partition depend on to the size of hard disk you are using. So it allows the user to create the space for the new partition, organizing space for the new drives, reorganizing old drives, and copying or moving data to a new disk for the partition. Okay, so how we can use this command? So simple command, that is fdisk options and device. Okay, so remember this thing. So fdisk options, so limited options are there, that is -l option is there, which is used to list the partition, all the partitions onto the storages. Okay, and the devices. So first command we can specify, that is fdisk -l without any devices. Okay, so as an option you can use a L, small l, that is for listing. So it will list all the partitions which is created. तो आपके मशीन में जितने भी फिजिकल स्टोरेजेस होंगे, जस्ट लाइक SDA, SDB, SDC, तो वो सारों को लिस्ट करेगा. और SDA में अगर कोई सब पार्टीशन है, जैसे 1 2 3 SDA1, SDA2, SDA3, अगर SDAB में कोई पार्टीशन है तो वो सारे पार्टीशन क्या करेगा, वो लिस्ट करेगा. सो वी आर नॉट गिवन अ स्पेसिफिक पार्टीशन नेम. So what it does, it will list all the physical storages along with the partitions with their capacity and some details. Okay, if you want to view a partitions of a specific disk, अगर आपको स्पेसिफिक डिस्क चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, सभी पार्टीशन को लिस्ट करेगा. जैसे आपके इसमें अगर 3 फिजिकल स्टोरेजेस है, SDA, SDB and SDC, and if you are only interested in listing a partition of SDA, not SDB or SDC, so what do, you can specify the device name. Okay, this is the argument, third option, that is fdisk option and device. So how we can specify the device name?
So whenever we add any hard disk to your Linux system, that particular hard disk goes into a folder that is DEV. Remember this thing. This path is very important when you specify a fdisk command. fdisk में आप simply SDA नहीं लिखोगे. You have to specify absolute path for your physical storage name. तो आपका फिजिकल स्टोरेज कहाँ पे रहेगा? दैट इज इन अ DEV directory, DEV devices, because it is a physical storage device. So definitely when the entry are made into the system, where that particular entry is made, that is in the slash DEV directory. Okay, and slash SDA. So if you add a first hard disk, the nomenclature is SDA. If you add a second hard disk drive, so then you have a slash DEV slash SDB. थर्ड हार्ड डिस्क ऐड करोगे तो नॉमेनक्लेचर क्या रहेगा उसका? यस, DC. SDC. Okay, so remember this path. That is always when we go for the storage management, your absolute path will be slash DV and slash SDA. Okay, if you are not confirmed whatever hard disk you are connected is connected or not, or detected or not, so we can execute this command from the terminal to check either disk is detected or not. So we have one DM ESG. So this truncate the message. ओके, तो एक जो आपकी लॉग फाइल होती है, बेसिकली ये कमांड क्या करता है, दिस विल रीड अ लॉग फाइल. ओके, इट विल रीड अ लॉग फाइल, क्योंकि सिस्टम क्या करता है, एक रन टाइम लॉग फाइल मेंटेन करता है जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर. जैसे आपने नया हार्ड डिस्क ऐड कर दिया, अगर सिस्टम ने डिटेक्ट किया तो लॉग फाइल में अपडेट कर देगा. और ये कमांड क्या करता है, ये कमांड DMESG विल रीड दैट पर्टिकुलर लॉग फाइल. Okay, so it will read the log file and we are given what is it? कौन सा ऑपरेटर है ये? सर पाइप ऑपरेटर. सो ग्रेप एसडी, तो हमें उसमें सारा कंटेंट रीड नहीं करना है. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द एसडी. तो जो लाइन एसडी के साथ स्टार्ट होगी, तो व्हाट वी आर गिवन दैट इज ग्रेप एसडी. ओके, तो ये रीड करेगा, देन इट विल गिव द ऑल द इंफॉर्मेशन टू दिस ग्रेप कमांड. और ग्रेप कमांड क्या करेगा, जो भी कीवर्ड हमने दिया है इसमें एसडी, इट विल ओनली सर्च द लाइन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लॉग फाइल व्हिच इज हैविंग अ एसडी नेम. ओके, तो वहां पे अगर SDA1 SDA2 होगा तो इट विल शो द इंफॉर्मेशन, लाइन इंफॉर्मेशन, which will tell you that this particular SDB is added at this time. ओके, तो वहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने जो हार्ड डिस्क फिजिकली ऐड की है वो वहां पे ऐड हो गई. ओके, सो दिस जस्ट अ कमांड विच इज यूज्ड टू कंफर्म. मैं बताऊंगा आपको कि वर्चुअल बॉक्स में एडिशनल हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं. वी विल सी दैट. ओके, so how we can use this command to create a partition? I have added the snapshot for your comfortable or convenience. I will share this PPT so you can refer this PPT and you can practice it. Okay, तो PPT में मैंने सारा जितना भी पॉसिबल रिक्वायर्ड है वो डाल दिया विद स्नैपशॉट की क्या आउटपुट आएगा, क्या देखना है आपको. ओके, सो वेरी इंफॉर्मेटिव PPT हैज क्रिएटेड फॉर यू. तो आप इसको फॉलो करके भी इस कमांड्स को इजीली एग्जीक्यूट करके देख सकते हो. So first command we can see that is fdisk minus -l. So following basic command list all the existing disk partition on your system. The -l argument stand for listing all partition is used with the fdisk command to view all available partition on Linux. The partitions are displayed by their devices name. For example, /dev, SDA, SDB or SDC. So you can see that this is executed, that is fdisk minus -l. So this has given this particular, because a single hard disk is there, so it will give SD disk /dev/SDA. So what is the capacity of this particular SDA? That is 637.8 GB. Okay, and forward about this particular remaining information that it will shows in the form of bytes. कितने bytes का है वो, कितने heads है, कितने sectors है, cylinders कितने हैं. Okay, all this that is basic units for your storages, which is different. We are only interested in this particular name, capacity of that, and you can see this. This particular SD is having total 9 sub partition. Okay, तो जैसे प्राइमरी पार्टीशन में ये पॉसिबल नहीं था,
So definitely that extended partition will be created out of this SDA, and then total 9 partitions are created onto that, and you can see that these are cylinder numbers which are defined start and end. Okay, so total how many cylinders are there? That is 77,541. So this is started with 1 and ended with 77,541. ओके, तो ये सारा जो जितने भी सिलेंडर्स है वो डिवाइड किए हैं. तो you can see that how many blocks are, because this is called the block devices, and it will allocate a memory space in terms of blocks. ओके, तो ये ब्लॉक साइजेस है, इससे आपको पता नहीं चलेगा कैपेसिटी क्या है उसकी. उसके लिए आप और कमांड यूज कर सकते हो, दैट इज block ID and all this. So by using that we can see the capacity in terms of GB. ओके, तो पहला पार्टीशन देखो आप क्या बना है यहाँ पे /db/sda1, एंड यहाँ पे इसके आगे बूट बूट जो कॉलम है उसमें स्टार किया है. मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? This is a bootable partition on which the operating system is installed. है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं इंस्टॉल होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द बूट पार्टीशन. है ना, जैसे हमारे विंडोज में होता है कि सी ड्राइव इज कॉल्ड एज द बूट पार्टीशन, जहाँ पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, विंडोज प्रोग्राम फाइल्स ऑल दिस. So similarly, when we install the Linux operating system, where the operating system are stored into the first partition, that is in SDA1, और उसके आगे स्टार मार्क लगा है बूट के इसमें. Is it visible? Yes. Yes, sir. है ना, तो दिस बूट इज द स्टार, तो इसके आगे SDA1 के आगे स्टार लगा है. दिस पर्टिकुलर पार्टीशन इज अ बूटेबल पार्टीशन. अगर आप इसको डिलीट कर दोगे गलती से by using fdisk command, so you are not able to boot your operating system, because that is the primary partition where your operating system is installed. तो जैसे आप सी ड्राइव अगर आप डिलीट कर दोगे तो क्या होगा, या सी ड्राइव को आप फॉर्मेट कर दोगे तो क्या होगा, आपका ओएस चले जाएगा. तो यहाँ पे स्टार दिया है, दैट इज स्टार्ट विद द 1 सिलेंडर 13 ब्लॉक्स, आईडी 83, तो दैट इज लिनक्स. ये हम लोग देखेंगे आईडी वगैरह, जो मैं आपको कमांड एग्जीक्यूट करके बताऊंगा ये. Okay, so you can see that 4 primary partitions are created first. So SDA1, SDA2, SDA3 and SDA4. So these are the 4 primary partitions are created. तो पहला पार्टीशन बूट पार्टीशन है, लिनक्स पार्टीशन. दूसरा भी लिनक्स के लिए रिजर्व रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. तीसरा भी लिनक्स पार्टीशन है. और फोर्थ पार्टीशन यू कैन सी दैट पर्टिकुलर पार्टीशन इज क्रिएटेड एज अ एक्सटेंडेड पार्टीशन. Is it clear? That is 4 primary partitions are converted into a extended partition and ID is 5. तो partition के हिसाब से क्या होता है, इसकी ID चेंज होती है. When you create a partition, ID is different for a different types of partition. जैसे आप Linux partition जो बनाते हो बेसिक, उसका ID होता है 83. अगर आप extended partition बना रहे हो तो उसका ID होता है 5. अगर आप swap partition बनाते हो उसका ID होता है 82. और अगर आप उस पर्टिकुलर पार्टीशन में अगर आपको लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट करना है, you have to use a dynamic storage management onto that partition, then you have to define that particular partition as a LVM partition. तो आखिरी का जो पार्टीशन आप यहाँ पे देख रहे हो SDA9, that particular partition is reserved as a Linux LVM partition. तो जैसे मैंने कहा कि लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट हम लोग करते हैं फॉर द डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट. तो जब भी अगर आपको उस पर्टिकुलर पार्टीशन के ऊपर एलवीएम कमांड्स एग्जीक्यूट करने यूज करना है, तो यू हैव टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर पार्टीशन एज अ लिनक्स एलवीएम पार्टीशन. ये जो लिनक्स पार्टीशन आपको दिख रहे हैं 83 नंबर वाले, उसके ऊपर आप लॉजिकल स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं कर सकते, डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं होता है. ऑल दिस आर द स्टैटिक वन. बट इफ यू वांट टू यूज अ एलवीएम कंसेप्ट, then your partition should be a Linux LVM partition. And what is the code of that LVM partition? 8E. Is it clear? Yes, sir. Okay, so you can see that we have extended partition, that is fourth partition as the extended partition. उसमें स्पेस देखो आप, एक्सटेंडेड पार्टीशन को स्पेस कहाँ से कहाँ तक मिली, कौन से सिलेंडर से कौन से सिलेंडर तक दी गई है, 4583. okay, and the last cylinder which is assigned for the extended partition is
77,541. Okay, and you can see that within that extended partition we have created a logical partition that is started with the SDA 5, SDA 6, 7, 8, 9. तो ये जो 5, 6, 7, 8, 9 है, ये सारे क्या है, लॉजिकल पार्टीशंस हैं, और ये किस में बनाए गए हैं, एक्सटेंडेड पार्टीशन में. कैसे कंफर्म करेंगे हम लोग ये कि उसमें ही बनाए गए करके? कोई दे सकता है इसका आंसर? Sir, we can use that -l command and give the absolute directory. नहीं नहीं, ये आउटपुट देख के मुझे पता. दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन. मैंने तो बोल दिया कि 5, 6, 7, 8, 9 आर क्रिएटेड अंडर दिस पर्टिकुलर SDA 4. देयर इज एन एक्सटेंडेड पार्टीशन. आउटपुट को ऑब्जर्व करो थोड़ा, सिलेंडर्स नंबर्स को ऑब्जर्व करो. Sir, the continuity is there. SDA 4 में 4583 से 77541 तक है. हाँ, मींस कंप्लीट जो बची हुई स्पेस है. हाँ सर, क्या that is Yes, yes. continuity is maintained there. हाँ, तो आप देखो द कंप्लीट स्पेस विच इज रिमेनिंग, ये 3 पार्टीशन बनाने के बाद जितनी भी स्पेस यहाँ पे बची थी, दैट इज अलोकेटेड टू SDA 4, दैट इज फ्रॉम 54832 to 77. This is the last cylinder of this particular physical storage, that is 77,541. You can see here, है ना, ये आखिरी है 77,541. और जैसे एक्सटेंडेड पार्टीशन को सारी स्पेस असाइन कर दी. जब हमने नेक्स्ट लॉजिकल पार्टीशन बना SDA 5, तो कहां से बना है, 4583. ओके, और वो कहां पे खत्म हो रहा है, 5887. यस, तो पहला वाला जो सिलेंडर वैल्यू है एक्सटेंडेड पार्टीशन का, वहां से शुरू हो रहा. अब जो भी कैपेसिटी आप जैसे 1 GB 2 GB जो भी उसके लिए अलोकेट किया होगा स्पेस, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिलेंडर्स विल बी एंडेड हियर. नेक्स्ट जो पार्टीशन बना SDA 6, यू कैन सी दिस. व्हाट इज द स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टीशन, 5888 है ना. यहाँ पे 87 खत्म हुआ था, 888 शुरू हो गया. अगेन दैट विल बी डिफाइंड. और सबसे आखिरी जो पार्टीशन बना है SDA 9, उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, दैट इज 77,541. तो ये जो रेंज है, जो पहला हमारा लॉजिकल पार्टीशन, ये कहां से शुरू हो रहा है, 4583, और खत्म कहां पे हो रहा है, 77,541, जो किसकी कैपेसिटी है, आपके extended partition. So all these logical partitions are created within this particular extended partition. So is it clear? Yes sir. Yes sir. Yeah. So you can create a multiple types of partitions here. So आप देखा extended में हमने logical बनाया, तो logical में 3 partition, Linux partition हमने बनाया. एक partition हम लोग swap partition, जिसे swap space डिस्क्राइब की थी. तो हम लोग भी अपनी स्वैप स्पेस बना सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टू इंक्रीज द स्वैप साइज. तो उसके लिए मैंने एक पार्टीशन को डिफाइन किया स्वैप. यहाँ पे मुझे डायनामिक स्टोरेज मैनेजमेंट कंसेप्ट यूज करना, तो आई यूज LVM. ओके, सो दिस इज fdis कमांड व्हिच इज यूज्ड टू लिस्ट ऑल द पार्टीशन. तो fdis -l dv and sda. Okay, so this is what just listing a partition which is available onto the storage. Okay. अगर स्पेसिफिक पार्टीशन के ऊपर, ओके, वहां पे तो SDB नहीं था. अगर आपको स्पेसिफिक पार्टीशन का पता करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस कमांड. जैसे यहाँ पे अब इसमें SDA ही था, तो डेफिनेटली SDA की उसने किया. मगर 2-3 अगर फिजिकल स्टोरेज जैसे SDA, SDB, एंड इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर पार्टीशन, देन यू कैन स्पेसिफाई द कमांड दैट इज fdis -l/dev/sda. ओके, तो इस तरह से भी आप स्पेसिफिक डिवाइस नेम देके उसके पार्टीशन को लिस्ट कर सकते हो यूजिंग -l ऑप्शन. नाउ वी कैन हाउ वी कैन क्रिएट अ पार्टीशन. So for that we no need to use the -l options. Again we can go for the fdis command. Okay, so if you want if you would like to view all the commands which are available for fdis, simply use the following command by mentioning the hard disk name such as /dv/sda as shown below. The following command will give you output similar to below. तो जैसे हमने पहले क्या किया था, just listing के लिए था. Now we want to create a partition.
I want to explore all the options which are available, not option, that is command which is available with the fdisk command. तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसके ऊपर अभी पार्टीशन बना है, तो आई विल गो फॉर द fdisk, देन द डिवाइस नेम. तो जैसे आप ये एंटर करोगे आपको इस तरह से आउटपुट मिलेगा, कमांड एम फॉर हेल्प एंड कोलन. तो जैसे अभी आपको यहाँ पे कुछ भी कमांड नहीं पता है, आपको पता करना है कि कमांड क्या है, तो आप ये कोलन के आगे क्या करोगे, यू कैन सिंपली टाइप द एम फॉर द हेल्प. Okay, so once you press this particular M, so you got the output like this. It will show all the options of this particular fdisk command in alphabetical order. That is A, B, C, D, L, M, जितने भी उसमें options है. So you can see that A for toggle a bootable flag. So you can change a bootable flag to any partition using A option. तो ये इतना हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है N option, that is adding a new partition, delete a partition, that is listing a partition. Okay, and listing a partition, that is list known partition type. Quit करने के लिए quit without saving the changes. Okay, S for creating a new disk label, changing toggle, ये important है. T for changing a system ID. जैसे आप initially जब partition बनाते हो तो always that is a Linux partition, and if you want to define as a LVM partition, then you have to use this T option. I will show you the execution of that. Okay, and for creating a partition we have a new N option, that is adding new partition. तो वन बाय वन हम लोग सारे ऑप्शंस देखेंगे उसमें. ओके, तो बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, M for listing this menu, then next is N, small n for adding a new partition. If you want to delete any partition, then D option you can use. Okay, for saving this, W is very important. So once you create all this partition, whatever changes you will make, you can execute a W command onto this prompt. So it will write the table to disk and exit. तो ये क्या करेगा, it will write the changes into that particular, जो भी partition table होता है उसमें वो changes को reflect करता है और save करता है. क्विट करना है आपको, आपने चेंजेस किए, आपको लगता है कि चेंजेस नहीं सेव करना है, आई वांट टू क्विट, देन क्यू एंड क्विट, कम आउट ऑफ दिस. लेबल चेंज करना है आपको, लेबल मींस आपको स्वैप पार्टीशन डिफाइन करना है, आपको फैट पार्टीशन डिफाइन करना है, आपको एमटीएफएस पार्टीशन, तो दैट इज कॉल्ड द टॉगलिंग अ पार्टीशन सिस्टम. जैसे सिस्टम आईडी हमने देखे थे, उसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए टी ऑप्शन यूज होता है. वी फॉर वेरीफाइंग द पार्टीशन टेबल and then exit. Okay, so these are the different options which are available with this particular fdisk command. So you can see this, these are the options, that is add new partition, create a new empty DOS partition. P option is important, print the partition table. So this is again important one. So every time when you want to list a partitions which you have created, you have to use this P option, that is print. Okay, तो इसमें से important है D, M for this menu, N for adding a new partition, P for printing a partition. If you don't want to save the changes, Q, T for toggling a partition, W for writing a partition. Okay, and write and exit, W for write and exit. So shall we continue it for the 10 minutes or we will stop? Sir, we can continue, I think. We will finish this fdisk command, okay, and then we'll stop. Okay, so is this clear? What are this option? There is M for menu. आपको कुछ भी नहीं पता है तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, उसके लिए आपको यहाँ पे दिया भी है M for help. तो आपको M कमांड जब आप टाइप करोगे तो ये सारे ऑप्शंस प्रिंट हो जाएंगे. अगेन यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर होगा, जो भी चीजें आपको एक्टिविटी करना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर what are the options are available for this activity, and according to you have to go for that. Okay, then print all partition table in Linux. तो जैसे आपको पार्टीशन टेबल प्रिंट करने के लिए क्या ऑप्शन था, P. ओके, तो जैसे हमने ये कमांड एग्जीक्यूट किया एंड वी आर टाइप अ P, तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है कोलन है ना, fdisk कमांड हमने एग्जीक्यूट किया, ये आएगा यहाँ पे, ये प्रोवाइड करेगा आपको कमांड M फॉर हेल्प. So now instead of M,
तो एम से आपने देख लिया क्या ऑप्शन है। आपको अभी क्या करना है, पार्टीशन टेबल की बिफोर क्रिएटिंग अ पार्टीशन यू वांट टू लिस्ट व्हाट पार्टीशंस आर अवेलेबल ऑन टू दैट पर्टिकुलर फिजिकल स्टोरेज। तो आप क्या करोगे, यू कैन टाइप अ पी। तो जैसे आप पी टाइप करोगे, एंटर करोगे, तो इट विल लिस्ट ऑल द पार्टीशन जैसे हमने fdix माइनस एल से किया था। तो सेम पार्टीशन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड हियर। यस, है ना, सेम पार्टीशन लिस्ट आएंगे यहाँ पे जो भी एसडीए में पार्टीशन थे। सो सेम इंफॉर्मेशन, ये सेम आउटपुट यहाँ पे आया है। यस, ओके, एंड द प्रॉम्प्ट इज अपियर्ड एट द एंड। यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट आया है फॉर द अनदर ऑप्शन विच यू वांट टू एग्जीक्यूट, आइदर यू वांट टू ऐड अ न्यू पार्टीशन। तो आपने प्रिंट करके देख ली क्योंकि ये सारे पार्टीशन बने हैं, अभी स्पेस तो कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। Now you want, if you want to create a new partition, then what you can do, again the same option, you can execute this command, that is fdisk/devsda। जैसे आप एंटर करोगे तो इस तरह का आपको स्क्रीन आएगा। अगेन कमांड लाइन आएगी आपको, कमांड एम फॉर हेल्प एंड कोलन। तो आप जैसे न्यू पार्टीशन क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑप्शन क्या अवेलेबल है एफडिस्क में न्यू पार्टीशन के लिए? N option, sir. An option. So if you have free left on one of your device, say SDA, and would like to create a new partition under it, then you must be in the fdisk command mode of SDA. Type the following command to enter into the command mode of specific hard disk. ये command enter करो। After entering in command mode, now press N. That is new command to create a new partition under device SDA with a specific size. This can be demonstrated with the help of following output. तो एन जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। सो आइदर यू वांट टू क्रिएट एक्सटेंडेड पार्टीशन और द प्राइमरी पार्टीशन। ओके, सो इट विल आस्क फॉर दिस। तो आप प्राइमरी पार्टीशन भी बना सकते हो इससे, या एक्सटेंडेड पार्टीशन भी बना सकते हो। तो जैसे आप अगर एक्सटेंडेड बना तो आप क्या टाइप करोगे, ई, है ना, यहाँ पे दिया है व्हाट लेटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो फॉर एक्सटेंडेड पार्टीशन यू कैन क्रिएट टाइप ई, तो एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएगा। अगर आप प्राइमरी पार्टीशन बनाना चाहते हो तो यू हैव टू टाइप अ पी। ओके, यहाँ पे आप क्या टाइप करोगे, पी टाइप करोगे। तो पी फॉर प्राइमरी पार्टीशन, ई फॉर एक्सटेंडेड पार्टीशन। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइमरी पार्टीशन में ब्रैकेट में लिखा है 1 to 4। ओके, सो 1 to 4 पार्टीशंस आर रिजर्व फॉर द प्राइमरी पार्टीशन। इसके बाद क्या, while creating a new partition it will ask you to option, that is extended or primary partition creation. Yeah, Sir, if there are already 4 primary partitions done, even then it will show P, or if we press P, in that case, will it show an error? ऑलरेडी अगर 5 है तो वो ऑप्शन ही नहीं देगा, एक्सटेंडेड का ई का ही ऑप्शन आएगा, पी नहीं आएगा वहां पे। Okay, sir. जब तक 4 पार्टीशंस आपके प्राइमरी नहीं होते तब तक वो दो ऑप्शन दिखाएगा, ई एंड पी। ओके, वंस यू क्रिएट अ 4 प्राइमरी पार्टीशन यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ प्राइमरी पार्टीशन, तो ऑप्शन जो है डिसेबल हो जाता है वहां से। ओनली यू कैन हैव अ ई ऑप्शन, दैट इज एक्सटेंडेड पार्टीशन। Okay, sir. Okay, so press E for extended partition and P for the primary partition, then it will ask you to enter the following two inputs, that is first cylinder number of the partition to be created। तो कहाँ से वो शुरू करना है, सिलेंडर नंबर। तो आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रेस द एंटर बटन। बाय डिफॉल्ट इट विल टेक अ फर्स्ट सिलेंडर, अनरिजर्व सिलेंडर से मैं बताऊंगा आपको जब कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो। एंड लास्ट सिलेंडर नंबर ऑफ द पार्टीशन टू बी क्रिएटेड। ओके, अगर आपको ये डिफिकल्ट जाता है तो आप वहां पे साइज भी दे सकते हो, है ना। फर्स्ट सिलेंडर लास्ट सिलेंडर से आपको पता नहीं चलेगा कि यार साइज क्या है, क्योंकि सिलेंडर से आप हम लोग साइज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट यू डू, यू कैन फर्स्ट सिलेंडर जब पूछेगा तो जस्ट प्रेस द एंटर बटन। तो जब एंटर बटन करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट सिलेंडर अवेलेबल है वो ले लेगा। और सेकंड सिलेंडर जब पूछेगा तो वहां पे आप क्या करो, सिंपली यू कैन स्पेसिफाई द साइज इंस्टेड ऑफ लास्ट सिलेंडर। जैसे आपको 2 GB का अगर आपको पार्टीशन बनाना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एंटर द साइज ऑफ द सिलेंडर बाय एडिंग +500 M।
Okay, that is in terms of MB. Okay, here plus means addition and 500 means size of the new partition, that is 5000 MB. So 5000 MB, this is not equivalent with the 5 GB because 1024 is considered as a 1 GB. So ये थोड़ा कम आ जाएगा. तो आप प्लस 2 GB कर सकते हो वहाँ पे. इसको 2 GB का चाहिए तो फर्स्ट सिलेंडर and the size of that partition will be 2 GB. So you can write down the plus 2G. So it will give you a facility either you can define the partition in terms of megabytes or in terms of gigabyte. तो अगर आपको मेगाबाइट्स में अगर डिफाइन करना है तो फर्स्ट सिलेंडर एंड सेकंड सिलेंडर में आप क्या करोगे प्लस 5000 M. ओके, तो फर्स्ट सिलेंडर से 5000 MB के जितने भी सिलेंडर्स होते हैं वो अपने आप लेगा और उतने साइज का वो पार्टीशन बनाएगा. ओके, अगर आपको मेगाबाइट्स में अगर डिफिकल्ट जाता है तो देन यू कैन हैव ऑप्शन दैट इज इन जीबी. तो उस केस में आप M नहीं लिखोगे, वहां पे क्या लिखोगे आप +2G, कैपिटल G. Always remember that this particular notation is in the capital letter, either in terms of MB or GB. तो G लिखोगे आप तो +2G, तो +2G means 2 GB का. अगर आपको 1 GB का बनाना है तो +1 GB, 1G. Okay, so you can specify the partition size like this, and please keep in mind that after creating a new partition, you should run a W command to alter and save the new changes to the partition table. अगर आपने partition बनाया है और उसके बाद अगर आपने W कमांड एग्जीक्यूट नहीं किया है तो क्या होगा, जब आप FD से बाहर आ जाओगे तो आपके जो पार्टीशंस आपने बनाए हैं वो सेव नहीं होंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू एनीथिंग, व्हेन यू क्रिएट एनी पार्टीशन ऑनटू दिस पर्टिकुलर स्टोरेजेस, always you can execute a W command. So whatever changes you have made, that will be saved into the partition table. है ना, जो partition table आपने देखा था MBR में 16 बाइट्स का होता है, वहां पे क्या करता है जो भी पार्टीशंस आपने ऐड किए उसका परमानेंटली वो एंट्री करता है. एंड फाइनली रिबूट योर सिस्टम टू वेरीफाई न्यूली क्रिएटेड पार्टीशन. ओके, सो वंस यू टाइप द W, जैसे आपने पार्टीशन बना लिया और आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जब W करोगे, ओके, तो मैसेज देगा इस तरह से द पार्टीशन टेबल हैज बीन अल्टर्ड. ओके, कॉलिंग ISL to this system call, okay, to reread the partition table. Okay, like this warning will be given, and not a warning, that is information. So you can confirm that your partition table is altered and whatever partition you have created are added into that. तो इसके बाद आप फिर से P एंटर करके देखो, तो P एंटर यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे जैसे W किया आपने P करो, तो P से वो आपके आपने जो नया पार्टीशन बनाया वो वहाँ पे डिस्प्ले करेगा. So will it be okay? Yes sir. Yes, sir. ये कुछ और ऑप्शन है. बूटेबल जो हमने पार्टीशन देखा था ना, बूटेबल पार्टीशन, वो भी आप फ्लैग को टॉगल कर सकते हो, है ना. जैसे पहले पार्टीशन SDA1 को बूटेबल फ्लैग दिया था, तो आप उसको चेंज कर सकते हो. आप दूसरे पार्टीशन को भी बूटेबल पार्टीशन डिफाइन कर सकते हो. और उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, you have this option, that is A. Okay, by using this option you can change the bootable flag to any partition. Okay, so how to disable boot flag of a partition? By default this command shows that boot flag symbol on the first partition. If you want to enable or disable boot flag on a specific partition, do the following step. Press P command to view the current partition table. You see there is a boot flag asterisk symbol on /dv/hda1 disk as shown below. तो पहले इसमें रहता है, आपको वो चेंज करना है, तो what you have to do, you can type A, next enter command A to disable the boot flag, then enter partition number 1. कौन से partition को आपको disable करना है, as in case this will disable boot flag on the partition /dv/hda1. This will remove the asterisk flag. Okay, just it will remove the asterisk flag, उससे इफेक्ट कुछ नहीं होगा आपके पार्टीशन के ऊपर. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बूट भी होगा. जस्ट सिंपली इट विल रिमूव द बूटेबल फ्लैग दैट. तो एक यूटिलिटी दी उन्होंने बाय यूजिंग ए ऑप्शन. डिलीट करने के लिए अगेन द ऑप्शन इज डी, है ना. तो डिलीट करने के लिए सेम प्रोसेस, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, पहले कौन सा पार्टीशन है वो देखो आप. बाय यूजिंग पी कमांड यू कैन आइडेंटिफाई द पार्टीशन नंबर. ओके, जैसे SDA1 SDA2, तो आपको 1 2 3 4 5 6 यही याद रखना है.
Okay, we will not specify the complete SDA 1 or 2. So to delete the partition for the hard disk and free up the space occupied by the partition, for example SDB, go to the command menu using the following. So you can go it and then type the D to go to the delete partition menu. तो D आप यहाँ पे prompt पे जैसे टाइप करोगे तो पार्ट डिलीट करने के लिए पूछेगा आपको और वो पूछेगा पार्टीशन नंबर. Okay, so partition number 1 to 4 because all 4 partitions are available into that. So it will show that numbers partition 1 to 4. तो आपने यहाँ पे 4 दिया है. 4 means this is the fourth primary partition we want to delete. Okay, तो आपने जैसे ही 4 दिया वो डिलीट हो जाएगा. Then after if you want to save the changes, जैसे आपने डिलीट कर दिया आपको सेव करना है तो then you can execute the W. So it will show the message that is partition table has been altered. जैसे आप पार्टीशन क्रिएट करते हो, पार्टीशन डिलीट करते हो तो W आपको यूज करना ही है. न्यू पार्टीशन के लिए आपको N करना है, डिलीट करने के लिए D करना है. Okay, so now we'll stop here. I think you understand this particular creating a partition fdisk command. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, I will show the execution of this and even I will share this PPT right now, so you can go through this PPT and execute the command. Again, I will share this video also, so you can watch it and do this activity. Okay, so we will stop here now.